Guys, welcome to the I Am Guy Campus Diaries. In this episode of the I Am Guy Campus Diaries, I am in Pune and I'm in MIT-WPU. ये यूनिवर्सिटी अगर आपको नहीं पता है तो काफ़ी पुराना है और इट्स बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 40 इयर्स. इसका MBA कोर्स भी काफ़ी पुराना है. इससे 1 लाख से ज़्यादा लोग मार्केट में जा चुके हैं. एलुमनाई हैं इसके जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं और MBA के भी काफ़ी लोग अभी एलुमनाई आर देयर इन द इंडस्ट्री. वी आर गोना कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस, गोना टॉक टू स्टूडेंट्स और हम पता करेंगे कि इनका एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से स्कूल्स ऑफ MBA हैं, क्या प्लेसमेंट्स इनका अभी स्टैटिस्टिक्स है, कौन कौन से कंपनीज आती हैं और सारी चीज़ें जो आपको जानना है हम इस वीडियो में कवर करेंगे. गाइस, तो कैंपस कितना बड़ा है आप देख रहे हो. इट्स ह्यूज. आई कांट इवन सी द होल कैंपस अपने आई साइड से अभी. और ये स्टैचू जो मैंने अभी दर्शन किया, ज्ञानेश्वर स्टैचू है इनका. तो व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट और व्हाई इज इट इन कैंपस? बिकॉज आई गॉट टू नो दैट MIT-WPU के कोर्स स्ट्रक्चर में थोड़ा स्पिरिचुअलिटी के कोर्सेज भी है. सो इट इन अ वे कंबाइंस स्पिरिचुअलिटी विद मैनेजमेंट एजुकेशन. जैसे एक सब्जेक्ट है पीस, विच इज नॉट देयर इन अदर B schools, which is very new and it's very clean and green actually, the campus. दोस्तों अभी हम चलते हैं इनके MBA डिपार्टमेंट में. तो ये इनकी MBA की बिल्डिंग है एंड हमारे सामने कुछ स्टूडेंट्स हैं एंड विल आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द MBA प्रोग्राम है. हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? हाय. तो आप सब अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो मुझे? Hello sir, I am Ramcharan. I am currently doing MBA in Operations and Supply Chain Management in here, and I am in MBA School of Business. My name is Anish Lonkar. I am from MBA Finance at MIT-WPU School of Business. ओके. Anish Lonkar and I are classmates. Even I am from SOB Finance MBA second year, Second year. and I've got PPO from BNY. आप दोनों भी सेकंड ईयर से हो? हाँ. Everybody here is from Okay. second year. Okay. only. I am Sandesh Sonone. I am right now pursuing MBA in Operations and Finance. I have received a PPO from BNY Mellon. So I'm Prachi Gadkari and also I'm pursuing my MBA dual from Ramcharan School of Leadership and I'm pursuing in Operations plus Business Analytics. ओके, तो मेरे 2 क्वेश्चंस हैं. Yeah. आप स्कूल ऑफ बिजनेस से और आप दूसरे School of स्कूल से हो. Leadership, तो yes. ये दोनों कौन से स्कूल्स हैं? क्या अलग है दोनों में? क्या एडमिशन प्रोसेस अलग है? एंड व्हाई आर देयर टू डिफरेंट स्कूल्स? School of Leadership is giving option for selecting 2 specializations at a time. For example, for me, Operations and Supply Chain plus Business Analytics. तो मैं 2 subjects cover कर सकती हूँ and even I can pursue my career in both the subjects. ओके. So that's the major और difference. दूसरे स्कूल में ऐसा नहीं है? The School of Business, only one specialization you can do. Like if Okay. you're doing And in which- finance, okay. finance, तो- operations and operations. तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है. Yes. और क्या क्या स्पेशलाइजेशन ऑफर्ड है सारे स्कूल्स में? Operations, HR, finance, business Okay. analytics, digital marketing. सारे जितने भी Yes, मेन yes. All. ग्रेट. आप अपने प्लेसमेंट्स के बारे में आप ही बताइए, आप कहाँ पे प्लेस हो? So I got placed at Trinamics as a associate business analytics with a CTC of 12 LPA. 12 LPA. Yes. एंड आपका क्या रोल है, मतलब व्हाट्स Associate business analyst. इन विच डिपार्टमेंट, मतलब स्पेशलाइजेशन? In operations and supply chain Operations plus में. business analytics. So I'm Okay. doing like both. कैन यू टॉक मोर अबाउट दिस रोल? So actually we are, my responsibility will be to design supply chain solutions using the Oracle ओके. और आपका software. समर इंटर्नशिप कहाँ पे था in Mercedes-Benz India. और उसमें क्या रोल था? I worked there as a project trainee. हाँ. तो वहाँ पे मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रही थी बेसिकली. हाँ, हाँ, एंड मुझे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले वहाँ पे. फॉर एग्जांपल जो EQS SCV आ रही है तो फिर वहाँ पे उसका जो स्टार्टअप है तो आई कुड एक्सपीरियंस हाउ द स्टार्टअप वाज हैपनिंग एंड एवरीथिंग. सो एज पार्ट ऑफ दैट, सो आई वाज पार्ट ऑफ मेनी 2 to 3 प्रोजेक्ट्स देयर इंक्लूडिंग द बिजनेस एनालिटिक्स प्रोजेक्ट एज वेल. टॉक टू अस मोर अबाउट प्लेसमेंट्स ओवरऑल आपके स्कूल ऑफ MBA में. मतलब कि लास्ट ईयर क्या था, क्या रूल्स आते हैं मेनली, जैसे आपका ऑपरेशंस में, और ओवरऑल कौन कौन से रोल्स ज़्यादा आते हैं, किस तरह के रोल्स आते हैं, कौन तरह की कंपनी आती है, और कितना सैलरी और
ओवरऑल ऑन एवरेज हम एक्सपेक्ट कर सकते एज ऑफ नाउ अभी हम सेकेंड ईयर में जस्ट एंटर हुए हैं, तो एज ऑफ नाउ फाइनेंस के काफ़ी कंपनीज आ चुके हैं, इंक्लूडिंग मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस एज वेल. दिस इज अबाउट योर स्कूल, आपके वाले एमबीए Yes, yes, the companies have come common for both. तो कंपनीज कॉमन आती है दोनों Yes, स्कूलों but we can apply for like Understood. both the specializations and other things. And even जैसे हम placements के बारे में बात कर रहे थे, तो one thing is that our university gives us training. तो करियर डेवलपमेंट सेंटर है यहाँ पे, जो हमें जो पर्सनल इंटरव्यूज़ है, ग्रुप डिस्कशंस है, तो इवन कंपनी रिलेटेड, इवन द डोमेन रिलेटेड नॉलेज, तो इसके लिए हम सेशंस ये करते हैं, कंडक्ट करते हैं, सो दैट वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू बिफोर हैंड, अंडरस्टूड. फॉर ऑल द प्रोसेस, एप्टीट्यूड हो, इंटरव्यू हो और एनीथिंग. रूल्स के बारे में थोड़ा पता है, फाइनेंस के रूल्स ज़्यादा आते हैं और किस तरह के रूल्स आते हैं फाइनेंस में? फाइनेंस के लिए कंपनीज डेलॉइट आ चुकी है, BNY आ चुकी है एंड मैनी अदर रोल्स, बट स्पेसिफिकली रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल ज़्यादा आता है. एंड मेरा भी उसमें ही हुआ था. एक्चुअली आई गॉट इंटर्नशिप ऑल्सो फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ. व्हिच कंपनी? BNY Mellon. ओके, और पीपीयू मिला आपको? यस यस, दैट आई कन्वर्टेड इनटू द. आपकी क्या सैलरी है अगर आप बताना चाहें? हाँ, 10.2 CTC है. वाओ. थोड़ा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताइए, दोनों स्कूल के बारे में. क्या अलग प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है? कौन सा एग्जाम लेते हैं? क्या कट ऑफ परसेंटाइल रहता है? एडमिशन प्रोसेस हमें यहाँ पर 3-4 एग्ज़ाम्स है जो कि हम दे सकते हैं. वी हैव कैट, वी हैव CMAT, वी हैव पैरा CT और MHAT, that is Maharashtra exam. So we can give those exams for the admission, and the fees for SOB is 9.5 lakhs for 2 years, and for RSOL 12 lakhs. It is around 12 lakhs. Our college have scholarship for CAT, we have for MAT and CET. कितना, मतलब कितने परसेंटाइल के ऊपर स्कॉलरशिप मिल जाती वो डिपेंड करता है. 80% के ऊपर समवेयर अराउंड फुल 90% के ऊपर फुल राइट फुल मिलता है. स्कॉलरशिप मिलता है? 100% स्कॉलरशिप भी मेरे क्लास में लोगों को मिली है. ओके. ऑल्सो देयर इज 80% स्कॉलरशिप भी मिली है एंड आई थिंक 25% स्कॉलरशिप भी मिली है. अरे दैट वाह. डिपेंड्स अपॉन आर कितना स्कोर हमने पहले से ला के रखा है. बहुत Actually, I बढ़िया. would like to add on about scholarship. So the thing is, I graduated from MIT itself. I did graduation in BCom e-commerce. So I am an alumni of MIT. So MIT offers 10% scholarship for alumni as well. तो लेकिन इतना आपका जो बैच साइज है, प्लेसमेंट्स के बारे में बात करें 800 और इतना, तो इतने टफ मार्केट में प्लेसमेंट्स हो जाती है पूरे अच्छे से? Yeah, so right now opportunities are there. So if you can make it, it's upon you as well. So I did my graduation in BCom e-commerce, as I said, but I got placed through operations because I had an experience of import and export business. So while doing my graduation, I also started my own company. So it used to do export business in ceramics. So when I was 19 and was pursuing my BCom degree, so at that time only I started my business as well. So from that I got an exposure to operations field as well. So after that I decided to go into operations because I had an experience of logistic and operations and supply chain. So that was an add-on for me to get placed in BNY. आपका, आप PBNY में प्लेस्ड? Yeah. एंड व्हाट अबाउट यू बोथ? आपका अपना प्लेसमेंट बताएं. I got placed in Deloitte as a tax consultant. ओके. एंड आपका प्लेसमेंट? Sir, I got placed in Trinamics. और कुछ अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या अच्छा है, व्हाई शुड समवन जॉइन? Something that I really liked about MBA and which I already had review that this is there, the faculty support. So the education doesn't end around clock that 9 PM 8 AM our classes are going और classes over हो गई. Faculties हमारे साथ connected है even after the college hours. किसी भी टाइप का सपोर्ट है. मेरा प्लेसमेंट था, मैं रात को 2-2 बजे भी अपने फैकल्टी से कनेक्टेड हूँ. मेरा इंटरव्यू है, मेरे को क्या हेल्प चाहिए, मैं कैसे प्रिपेयर करूँ. दिस इज़ जो एक एनवायरनमेंट जो मिल रहा है यहाँ पर, जो पिछले 1.5 साल में मुझे मिला है, आई थिंक दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ व्हाट विच आई रियली केम हियर फॉर. हॉस्टल्स के बारे में बताइए. फुल्ली रेजिडेंशियल कैंपस की? नो, इट्स नॉट फुली आप रेजिडेंशियल. लोग बाहर रहते हो, हॉस्टल में रहते या वी लिव आउटसाइड. हो? मतलब आस-पास रहते हो? हाँ. और हॉस्टल में कैसा है, सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी? हॉस्टल में वी हैव डबल ऑक्यूपेंसी और ट्रिपल ऑक्यूपेंसी सब भी कुछ है. है. Okay. एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स जो हॉस्टल में रहते हैं. दे आर क्वाइट हैप्पी बिकॉज दे प्रोवाइड फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है जो मॉर्निंग में आता है कॉलेज तक एंड वापस जाने के टाइम पे भी टाइमिंग्स होते हैं बस के एंड वो उनके साथ में ही तो आप सब चले पुणे से हो, बाहर से? भी नहीं, मैं तो बाहर से हूँ. एक ही बार. आई थिंक एवरीवन इज फ्रॉम आउटसाइड एक्सेप्ट वन. आप भी पुणे से ही हो. अच्छा, आप भी पुणे से ही हो. Nice. ठीक है. और कुछ? एक बेनिफिट मैं बताना चाहूँगा, RSOL का जो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है, तो स्पेशली क्या है कि जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है पहले कि स्पेशलाइजेशन कौन सी चूज़ करना चाहिए, क्योंकि क्लियरिटी नहीं होती बच्चों के माइंड में कि अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड किस सेक्टर में है. तो मेरा, जैसे मैं ऑपरेशंस में था, बट मैं फिनांस में भी जाना चाहता था. अब जैसे कि मेरे ऑपरेशंस में प्लेसमेंट तो हो चुकी है, बट
मुझे एक फिनेंस का भी एक्सपोजर अभी मिल चुका है कि मैं फिनेंस भी आगे चल के BNY इज इनटू फाइनेंशियल सेक्टर्स, सो मैं ऑपरेशंस के साथ साथ फिनेंस भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, जिसके कारण मेरा स्किल सेट जो आगे चल के काफ़ी वर्सेटाइल एक बन सकता है। हमारी यूनिवर्सिटी उसका क्या फ़ायदा है कि जो इवेंट्स होते हैं लाइक SLDP है, राइड है, नहीं तो गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, तो हमें जिस किस्म का एक्सपोजर मिलता है, जो हम नेटवर्क्स बिल्ड करते हैं, कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, सो इट गिव्स अस अ अपर हैंड। बिकॉज जैसे मेरा प्लेसमेंट हुआ था, हम दोनों ट्रिनेमिक्स में ही प्लेस्ड हुए हैं, तो हम पूल कैंपस गए थे। इट वॉज नॉट इन आवर कैंपस, इट वॉज आउटसाइड, इट वॉज इन अदर कैंपस। सो देयर to stand out, these were the things that we stood out and including that जो immersions होते हैं हमारे रूरल, नेशनल एंड इंटरनेशनल immersion. So talking about international immersion, first year में हम School of Leadership, we got an opportunity to go at NCR School of Business in Singapore. अच्छा, There we completed everyone? ओनली स्कूल ऑफ लीडरशिप के लिए ये अच्छा, हाँ, अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। तो वहाँ पे हम सिंगापुर में NCED स्कूल ऑफ बिजनेस था, तो वहाँ पे भी कंप्लीटेड लीडरशिप एंड कितना स्ट्रैटेजी टाइम थे कोर्स। आप वहाँ पे? वहाँ पे 1 वीक थे हम लोग, एक हफ्ता थे आप? यस, एंड वहाँ पे हमने लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजी का कोर्स किया था कंप्लीट, एंड तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें स्टैंड आउट करवाती है फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम सिंगापुर, माई यूनिवर्सिटी ऑल्सो गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ द दुबई गाइटेक्स ग्लोबल एक्सपो देयर, Which was also for everyone? yes, which is for the whole campus Whole actually. campus, okay. Yes, including engineering students, MBA students and all. Okay. So there we got to be we got to interact with the startups which were from all the sectors. So that was very interesting. Yeah. और बता दीजिए एज अ स्टूडेंट, अभी जो और बच्चे आएंगे, Yeah. कितना मतलब एवरेज सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर प्लेसमेंट लगता है रिसेंट, तो कितना दोनों स्कूल ऑफ बिजनेस में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Maybe 14 you can expect. मुझे बोला गया कि आपका पीस का कुछ सब्जेक्ट होता है, तो क्या ये दोनों में होता है और ये क्या है पीस? मैंने तो कोई पढ़ा नहीं। व्हाट इज टॉट इन पीस एंड हाउ डज इट हेल्प यू? Okay, so this is a very unique thing about our university कि हमें पीस एंड योगा ये दोनों सब्जेक्ट्स कंपलसरी है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो योगा में प्रॉपर हमें योगा सिखाया जाता है सुबह सुबह एंड बिफोर आवर लेक्चर स्टार्ट, एंड हमें एग्ज़ाम्स भी देने पड़ते हैं कम्प्लीटली एकेडमिक, एंड उसके साथ जो पीस सब्जेक्ट है वो जैसे कि अभी हम सीखते तो सब लोग हैं, ठीक है, बट हाउ वी आर सपोज टू यूज़ आवर नॉलेज इन फॉर बेटरमेंट ऑफ अ कम्युनिटी, वो हमें सिखाया जाता है कि पीस, वर्ल्ड पीस के बारे में सिखाया जाता है, इनर पीस के बारे में सिखाया जाता है। सो दे आर जस्ट नॉट एजुकेटिंग अस, बट हमें बेटर ह्यूमन बींग्स बना रहे हाउ डज हैं। दैट हेल्प यू इनकॉर्पोरेट? They are building my personality not only professionally but personally as well. कि they are making me a calmer human being, you know, and a bit of self-aware and intellectual human being. जो emotional intelligence की आजकल ज़रूरत है, तो वो सब हमें पीस में सिखाया जाता है। बढ़िया, थैंक यू Yeah. फॉर दीज वंडरफुल आंसर्स। Yeah. कुछ आपको और ऐड करना है मे बी? हाँ, Yes. ऑल्सो फॉर पीस कभी कभी ऐसा होता था कि जो फैकल्टी आ रही है वो इंडस्ट्री से आती थी, एंड दोज पीपल यूज टू प्रैक्टिस पीस ऑन डेली बेसिस, दे यूज टू डू मेडिटेशन, सो इवन दे यूज टू शेयर देयर एक्सपीरियंस कि हाउ उनका जो एग्रेशन लेवल है वो कम हो रहा है, हाउ दे कैन फोकस बेटर, एंड कैसे उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इन रियल लाइफ बढ़ रहा है। सो अकॉर्डिंगली इवन आई थॉट that even I can inculcate all those things. One more thing that we missed is my university has a legacy of 40 years. So you know, whenever when I was hunting for jobs, I was having some target companies, so we were already having our seniors there which were helping us through the process and were guiding us how we can get it. So this is networking. MBA is about networking. So when your university is having such a huge alumni group, that is really a great help. थैंक यू फॉर दीज वंडरफुल आंसर्स। Thank you, sir. विश यू ऑल लवली टाइम एट MIT-WPU and all the best. At MIT-WPU University, we all are committed to providing a value-based education where we transform an ordinary student into a leader who is physically strong, mentally alert, intellectually sharp, and spiritually elevated. In order to ensure and to give more exposure to the students, there are different clubs which are operational at the School of Business. So this gives the students an opportunity to think, to innovate, and to find out what they can do and what is happening in the real world. And through the club, they are able to identify their leadership qualities as well.
We are offering 3 different immersion programs during the tenure of the program. One is what we call as a rural academic immersion program. Then we have a national academic immersion program, and then we have a global academic program. It again gives them the exposure that at what level of competition they have to face, because right now we are not competing only at the national level, we are also preparing our students for the international level. Guys, Prachi has also received a scholarship, so let's know from her कि क्या आपको कितना scholarship मिला है पहले? I got 1.5 lakhs of scholarship. And how did you get it? What was the criteria? It was based on my CAT score, that was 88 percentile. So 88 percentile? Yes. Okay. In CAT. And so scholarships are of different types. There is post scholarship होती है, फिर विश्वनाथ कराड scholarship है, that is 100% scholarship. तो and कितने then, 100% कितने में मिल जाता है? 90 के ऊपर? Yes, 92 के above, 92 percentile above. And you've got how much percentage? 25%. Yes, I got 25%. 25%. So, yes, and then 50%, but the percentile depends. हर साल change होता है, and but the scholarship really और helps. कब अप्लाई करना होता है? एडमिशन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं? Yes, admission के बाद ही apply अप्लाई करना होता है. Yes. ठीक है, थैंक यू सो मच. Yes. गाइस, अब देखते हैं क्लासरूम MIT-WPU के. This is the classroom and I have some students here with me. Hi guys, I'm here to talk to you guys. Hello. First of all, आप कौन से स्कूल ऑफ MBA से हो आप लोग सब? There are two schools of MBA, right? Yeah. Then which one are you from? So we are from Ramcharan School of Leadership. Okay, and okay, so tell us something about your college that you want the viewers to know, and also about your placement company and details if you're placed. Okay, so hello sir, my name is Samiksha Badhe and I have been placed at BNY Mellon and I am currently pursuing my MBA in Finance and Business Analytics. So prior to that I have completed my BCom from Pune University. Great. So the main reason why I selected Ramcharan School of Leadership was the offering of dual MBA, because there are very few B schools in India that offer the dual MBA. And I wanted to take the opportunity to explore both fields so that I can have a varied career path. Also, I can explore the challenges and opportunities available in each field. Great. So basically the placement which I got at BNY Mellon, BNY Mellon is an American investment banking and investment services providing firm. I was placed at a CTC of 10.20 LPA. Wow. Yes, and besides that, I have received a pre-placement offer from them due to my exceptional performance in summer internship, and my college helped me a lot in that process because of varied certification courses offered by the colleges. One of them is Harvard Business School certifications. We were allowed to gain knowledge and experience from the Harvard mentors, which I think paved a major way in my success. And also the LinkedIn free premium subscriptions were given to us, so that we can connect with industry leaders and experts, get to know them, connect with them and explore better opportunities. So I'm Riya Thakkar. I'm pursuing my MBA in Finance and International Business. So I'm placed at Winsoft Technologies India Private Limited, and it is basically a software providing company and has multiple clients such as IDFC Bank, ICICI, Kotak. And the reason why I chose Ramcharan School of Leadership was the faculty is really approachable. The day from which I came to take admission in MIT, it was a fantastic experience. So I felt that as compared to other colleges, the faculty here is really approachable. They explain me the various dimensions of the program, like what all options are available to me and what are the subjects that they will offer. So apart from that, we were also provided with the Indian Express subscription, because we as MBA students, it is moreover important to stay updated and aware of the happenings around the world. So I think that this decision was the best decision. Great. Yeah, hi. I'm Deepa Payanwar and I'm currently placed at Deloitte, India. So basically the role that I have been given is of USI taxation, that is US India taxation, and I'm placed, the package is around 7.6 LPA. So basically one thing that stood out for me when I applied for MIT-WPU is basically the outstanding responsibilities that were given to us, basically starting from soft skills, technical skills. Not just that, in fact, we even were told about GDs, group discussions, and how PIs, that is personal interviews, take around. So we got understanding towards that as well.
So overall, it's been an amazing journey for me. I have completely used all the resources that were provided to us, and I request everyone who's around out there, MIT-WPU surely is an excellent university to go through. Hi, I'm Mehak Soni. I'm pursuing a dual MBA in Finance and Business Analytics. I'll be talking about the summer internship program that we have. So essentially, it's a 3-month program after the first year of MBA is completed. And it stands out in a sense that the internal coordinators and the external coordinators are very well versed, well contacted with each other. By external coordinators, I mean the industry coordinators that we have in our companies. One thing that stands out for me at MIT-WPU is the international immersions, the experience, the exposure that they provide to us. So this year, recently, we had been to 2 international immersions so far. The first one was earlier this year in the month of April in Seattle, Singapore, and the most recent in the month of October was GITEX, Dubai. My name is Shantanu Joshi. I'm a second year MBA student. I'm currently placed at Eka Mobility, which is India's largest EV manufacturer for commercial vehicles. EV manufacturer? Yeah. Okay. At a CTC of 9.2 LPA. Great. And one of the big reasons why I chose Ramcharan School of Leadership was because apart from all of the great faculties, the CDC was a huge help for me. They groomed us very well. They gave us a lot of insights into when how... When you say CDC, the placement preparation team? Yeah, the placement department as well as career development center. They gave us a lot of opportunities as well as insights into how interviews were conducted, how the process would look like. So we were prepared from the get-go. Guys, हमने काफी डिटेल में सुना about the final placement details of these students. Guys, I have with me Professor Ishwar Krishna Iyer. He is the Dean of Ramcharan School of Leadership, about which we've talked about a lot. Sir, tell us about a few key things which differentiates. This is a new school of MBA for the students. So a few key things which differentiates this course from the rest. Ramcharan himself is a differentiator of all the living Indian legends whom I can think of in the business space. I can't think of a name more celebrated than Ramcharan himself. And that Ramcharan has chose to lend his name to the school, that itself is a key differentiator. As you might be aware, MIT-WPU University has always been in the space of grooming political leadership. We are probably the first, and to my limited knowledge, the only university in India where there is a specific school which aims at grooming people to lead India in the political spectrum tomorrow. So it's very, very logical that at some point in time the university would have thought that there should be now a niche specific school which grooms people for corporate leadership. So that should have been the starting point for Ramcharan School of Leadership to take its genesis. So when you say that this stands for corporate a lot more, what are the things that students would get to witness in this course? For example, I've heard about international immersion program. What other activities do they participate in which are preparing them, because it's a new program, so which are preparing them for the new industry environment? Nothing speaks like numbers and outcomes. So my very first batch which passed out was a small batch of 71, handpicked from the students who have already joined the system, and we could place most of them. Some of them went to family business, their own family businesses, and we could reach an average CTC of about a shade less than 7 lakhs. My new placement system, the process has only just about started, and I already am running an average of about 10 lakhs, wow, with my highest salary currently at 15 lakh plus. So there is something which is enhancing the quality of education and the quality of inputs that we are giving to our students. It could be a set of simulations, it could be intense case-based studies, it could be mandatory international immersions. Most of the schools would probably not have an international immersion at all. Yeah. We have a mandatory international immersion. Last time I took my kids to INSEAD, Singapore, where they had a fantastic time studying nuances which are taught directly by professors from INSEAD. We take students for a 2-week national immersion. We take students to rural immersion. Mahatma Gandhi has once mentioned that the soul of India lies in her villages. So we take them to understand how real village economy, rural economy works. Totally, I agree. I've been to a lot of B schools as part of my Campus Diaries program.
and I've not seen many V schools which has a rural immersion program as well as a mandatory international immersion program, and which is why the numbers are being reflected like you're saying. Thank you so much for these answers. I wish you and the program all the best. We warmly thank you for gracing this campus and giving an occasion for us to showcase what we stand for. Guys, had a lovely day at this beautiful campus in Pune. ये सारे एग्जाम्स लेता है नेशनल लेवल के, जैसे कैट लेता है, MHC, TC, मैट. आपके कुछ डाउट्स हैं जो मुझसे पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछें. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर.